आईसीएसआई की मेंबरशिप तो ले ली, अब कौन सी मेंबरशिप लेनी जरूरी है? आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ सीएसपीएफ। आर यू? Hello everyone and a warm welcome to my channel CS Ritu Goyal. But if you're new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon. So in this particular video, I am going to guide you about CSBF contribution. I am a proud member of CSBF. Are you? What? You're not aware of what is CSBF? आपको CSBF के बारे में नहीं पता? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. I would request you to stay till the end of this video so that you will be able to understand the complete concept of CSBF fund. CSBF fund is a benevolent fund by the ICSI for the benefit of family members of the members of ICSI. So if you are member of ICSI, then I suggest that you should take the membership of CSBF fund. Now what is required in that? You need to डिपॉजिट ओनली अ सम ऑफ 10,000 रुपीज। आपको सिर्फ 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए आपको जमा कराने हैं CSBF फंड में बाय वर्च्यू ऑफ सबमिटिंग फॉर्म ए, the link of which I will be attaching in my description box. Now what is the benefit of that, या why should we do that? आप मेरे से ये पूछेंगे कि हमें इसका क्या बेनिफिट है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो लाइफ है, दिस इज क्वाइट अनसर्टन। हमने कोविड टाइम्स में देख लिया था कि कितने परिवारों ने अपने कितने अपनों को खोया था, और उसके बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे परिवार को। जब हम यंग होते हैं तो हम लाइफ को खुल के जीना चाहते हैं, पर यही वो समय होता है जब हमें अपनी लाइफ की टफ डिसीजंस को भी ले लेना चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फैमिलीज financial independence. So if you are the bread earner of your family, so this CSBF fund is a must for you. आपको CSBF लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगानी चाहिए। In case of any mishappening, God forbid, अगर हमारी लाइफ के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर्स को इसमें बेनिफिट मिलता है। सो लेट अस टेक अ क्विक लुक एट दैट पर्टिकुलर फैक्ट। तो ये जो फंड है, ये हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1976. इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर द रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली। तो अगर आप इस फंड में कंट्रीब्यूशन करते हो तो दिस इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। इस फंड में कंट्रीब्यूशन करने से आपको बेनिफिट मिलता है। यू कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज वेल। Let us look at the benefits of becoming a proud member of CSBF. The family will get 10 lakh rupees in case of death of a member up to the age of 60 years, 3 lakh in case of death of a member above 60 years in deserving cases, 50,000 per child, maximum to 2 children for education of minor children of a deceased member up to the age of 60 years, 75,000 for medical expenses in deserving cases, limited benefits of company secretaries who are not the members of CSBF. सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स तो उनकी फैमिली को 10 लाख रुपीस तक मिल जाते हैं। अगर किसी मेंबर की डेथ 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज में होती है तो उनकी फैमिली मेंबर्स को 3 लाख रुपीस मिल जाते हैं इन डिजर्विंग केसेस। अगर किसी मेंबर की डेथ अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स होती है तो उनके बच्चों को 50,000 रुपीज पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन यानी कि 1 लाख रुपीज तक उनको मिल जाएगा फॉर द एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन। अगर कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाता है या उनके मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं तो 75,000 तक इंस्टीट्यूट उनको प्रोवाइड करता है इन डिजर्विंग केसेस। हाउएवर जो मेंबर्स आईसीएसआई के हैं जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली सीएसबीएफ फंड की, उनके लिए लिमिटेड बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। So I would request you to become a member of CSBF today
Please don't wait until it is late. Register yourself now. Thank you so much. For further clarification or information on the matter, you please click on www.icsi.edu/csbf/home. So, most of you who have not yet enrolled with this fund, I request you, it's my humble request that please go and register yourself by filling Form A. So, this contribution of 10,000 rupees is for lifetime membership and needs to be paid only once by a member. So, those of you who have not yet subscribed to my channel, please do it. And you're also free to share this content, share my videos among your other members of the professional fraternity so that they can also be benefited out of the same. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye. Thank you so much for watching. Stay tuned, stay blessed.